In this chapter, uh, we will discuss about the chemistry of class 10. You can say this is chemistry, chapter number 10. So, in chapter number 10, we will discuss this is the uh, KPK, Khyber Pakhtunkhwa Text Board of Peshawar. So, you can say that this is chemistry of class 10. So, in this chapter number 10, we are going to discuss about the chapters which are given, which is the first chapter number 9. So, that is the chemical equilibrium, you can say. The second chapter number 10 is acid, bases, and salts. And the third chapter, chapter number 11, is you can say organic chemistry. And the fourth chapter is chapter number 12, this is hydrocarbons. So the fifth chapter is chapter number 13, which is biochemistry. And the final chapter of, you can say, chapter number 6, or here is chapter number 14, because we are starting counting from 9 chemistry. So you can say, so this is the environmental chemistry, you can say the atmosphere. So now let's first come towards the chapter number 1, you can say chapter number 9, which is chemical equilibrium. So let's start first the chapter. तो इस ये 10th क्लास की बुक है, इसमें हम जो पहला चैप्टर है उसका है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा है हाइड्रोकार्बन्स, पांचवा है बायोकेमिस्ट्री और छठा है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और द एटमॉस्फेयर। तो इस हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 9, इसको हम शुरू करते हैं। So chapter number 9, that is, you can say the chemical equilibrium. So what is chemical equilibrium? Let's come towards its introduction. So we can say that according to introduction, you can say, consider a closed container partially filled with the liquid at a given temperature. Molecules escape from the liquid into the vapor phase and are collected in the free space about the liquid. Some of the vapor molecules start to condense back into the liquid state. Initially, the rate of condensation is slower than that of evaporation. But as more and more vapors are formed, the rate of condensation increases and ultimately become equal to the rate of evaporation. At this stage, both evaporation and condensation continue to take place without any net change. This system is said to be in a rate of dynamic equilibrium. So here, this is the, you can say, liquid water, and this is converted into gas by means of evaporation, and the vapors are again condensed by converted into liquid by condensation. So you can say तो ये बता रहे कि अगर हम एक हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है और उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है एक गिवन टेम्परेचर पे, तो क्लोज कंटेनर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड एस्केप होंगे लिक्विड से वेपर फेज की तरफ, फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर फेज। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एस्केप होना शुरू होंगे फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर स्टेट, और यही मॉलिक्यूल जो है ये उस क्लोज कंटेनर में
कलेक्ट होंगे। यानी उस लिक्विड, उस क्लोज कंटेनर के अंदर जो लिक्विड के ऊपर फ्री स्पेस होगा, उस लिक्विड के ऊपर कंटेनर के अंदर उसमें वो कलेक्ट होंगे। यानी अगर हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है तो उसमें अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर वी कैन से यहाँ पर हमारे पास लिक्विड पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है। तो अब एक खास टेम्परेचर पे एट गिवन टेम्परेचर यहाँ पे अगर हम कोई खास टेम्परेचर रखें तो ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ये होंगे एवापोरेट यहाँ से लिक्विड, तो ये यहाँ पर जो फ्री स्पेस है इसमें कलेक्ट होंगे यानी जमा होंगे। ये कह रहे कि ये क्या होंगे, यानी जो इस कंटेनर में जो ये फ्री स्पेस है इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इकट्ठे होंगे, कलेक्ट होंगे इस लिक्विड के ऊपर। तो इनमें से जो सम यानी वेपर मॉलिक्यूल्स है, यानी ये वाले जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं स्टार्ट टू कंडेंस बैक इनटू द लिक्विड स्टेट। तो इसमें से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाले, ये कह रहे हैं कि ये वापस यानी क्या करेंगे, वापस इस लिक्विड फेज में वापस कंडेंस होंगे, यहाँ पर वापस आएंगे, कंडेंस होंगे। तो ये बता रहे हैं कि इनिशियली शुरू में क्या होगा, शुरू में ये जो है जो रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है ये क्या होगा, ये स्लो होगा। लेकिन जैसे ही इन ऑपरेशन के मुकाबले में जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो स्लो होगा। लेकिन जैसी जैसी ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, रेट ऑफ रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली रेट ऑफ ऑपरेशंस के बराबर होगा। यानी यहाँ पर ये जो बताया गया, ये जो रेट ऑफ ऑपरेशन है ये रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा, एक स्टेज आएगा। तो यानी जब ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन, तो इस स्टेज में दोनों एवापोरेशन और कंडेंसेशन यानी ये हो रहे होंगे लेकिन बगैर कुछ, यानी रेट ऑफ ऑपरेशन भी हो रहा होगा, कंडेंसेशन भी हो रहा होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये जो डेवलप होगा ये सिस्टम, इसको हम कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये यानी ये सिस्टम जो है ये क्या है, स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम वो सिस्टम कौन सा है जिसमें जो रेट ऑफ कंडेंसेशन एवापोरेशन है बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, एंड इन दिस केस द both operation and condensation continue to take place but without any net change। तो इसमें यानी कि दोनों हो रहे होते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑपरेशन, लेकिन ये कि वो सिस्टम जो है ना क्या होगा, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो इसको हम कहेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अब नेक्स्ट वन है रिवर्सिबल reaction and dynamic equilibrium। So you can say, consider the following reaction: nitrogen N2 plus 3 that will gives 2NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब आप आपस में मिलाते हैं तो ये अमोनिया बनाता है। This reaction proceed in the forward direction, but as soon as some amount of ammonia is formed, the ammonia molecules dissociate into nitrogen and hydrogen and the reaction is reversed। So here the ammonia is, you can say, molecules dissociate to gain nitrogen and hydrogen and the reaction is reversed। तो अब ये ऊपर वाला एग्जांपल दे रहे हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो ये बता रहे हैं कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें, यानी एग्जांपल किसका ले लें, ये जो नाइट्रोजन है
नाइट्रोजन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ मिला लें तो इससे क्या बनेगा, एमोनिया बनेगा। नाइट्रोजन को अगर हम हाइड्रोजन के साथ मिला लें तो ये क्या बनेगा, एमोनिया में कन्वर्ट होगा। यानी जहाँ पे एक मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट विल गिव 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के एमोनिया बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, दिस इज एमोनिया, सो कैन से दिस इज एमोनिया, एमोनिया एमोनिया बन रहे हैं। तो अब ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये बन रहा है, ये इस तरह ये हो रहा है। तो फिर ये जो है, बट जैसे ही ये कुछ एमोनिया बनेगा, ये एमोनिया बनेगा तो द एमोनिया मॉलिक्यूल यानी फिर क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, यानी रिवर्स रिएक्शन के जरिए से यही एमोनिया मॉलिक्यूल जो बन रहा था ये दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होंगे। जिस तरह ये बताया गया, नाइट्रोजन यानी यही एमोनिया जहाँ पर ये है, ये दोबारा क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। यानी ये यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था, अब ये एमोनिया दोबारा फिर रिवर्स रिएक्शन के जरिए से इसमें कन्वर्ट होगा। तो such reactions which proceed in the forward direction as well as in the reverse direction are called reversible reaction। तो वो रिएक्शंस जो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी हो रहे होते और फिर वही प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में रिवर्स रिएक्शन के जरिए से कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस है। यानी ये क्या होगा, इसको कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी एमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन और फिर उस रिएक्शन के नतीजे में एमोनिया का बनना और फिर उस एमोनिया का दोबारा डिसोसिएट होके रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज होना, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। Most of the reactions are reversible. Reversible reactions can be represented by an arrow, by two arrows. This is the two arrows due to which we can represent the reversible reactions between the reactants and product. For example, the above reactions can be written as follows. So we have this is the first step of the reactions. I can say this is the second step of the same reaction. So if we write these two reactions in one phase, we can say that this is the nitrogen plus hydrogen, and this is form ammonia, and this ammonia then again dissociate by this reverse reaction to form again nitrogen and hydrogen. So we can say that other examples are also given. In other examples, we have taken the example of sulfur dioxide 2SO2 plus O2 in the gaseous form to produce sulfur trioxide 2SO3. You can say this is the reaction of 2SO2 plus O2 that gives 2SO3. You can say in the gas form, or we can say that the reaction of hydrogens plus iodine to produce. तो यहाँ पर ये 2HI, so you can say this is the reaction of hydrogen plus iodine and to form, we can say 2HI. So this is the example of reversible reaction. Now let's consider general reactions in which A react with B in the gaseous state in the closed vessels forming product C and D. So we can say this is we can say the A reacts with B to form C and D. This is the reversible reaction, and again this C and D and C converted into A and B by the irreversible. We can say by the reversible reaction. So the initial concentration, we can say, taking account the example of this one, this example, we can say the initial concentration of A and B is taken the same, while that of the products C and D is 0. So you can say initial concentration, you can say, of A and B is taken the same. So this initial concentration of A and B, you can say these are the same, while that of C and D are 0. It means that no reaction is going to take place because we have only
You can say in the reactant we have just A and B, where no reaction takes place at initial stage. So as the forward reaction proceeds, the concentration of the reactants, you can say the concentration of the reactants A and B decreases and the concentration of the product of C and D increases continuously. So ये बता रहे कि जैसे ही ये फॉरवर्ड रिएक्शन यानी इनके दरमियान में रिएक्शन शुरू होगा, तो रिएक्शन जब शुरू होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन करेंगे ए एंड बी, तो फिर ये आगे जाएगा ये रिएक्शन, इसके नतीजे में क्या बनेगा, सी एंड डी बनेंगे। सी एंड डी जब बनेंगे और इसकी जो क्वांटिटी इंक्रीज होगी, while that of the reactant A and B will decrease. So we can say the concentration of C and D बढ़ेगी और concentration of A and B कम होगी. So we can say that therefore the rate of forward reaction decreases and that of the backward reaction increases. So ultimately a stage reaches when the rate of forward reactions becomes equal to the rate of backward reaction. At this stage, the concentration of the reactant and product become constant. So reaction at this stage is said to be at the state of equilibrium. तो ये बता रहे कि जब ये रिएक्शन होगा, ए और बी के दरमियान में रिएक्शन शुरू होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, द रेट ऑफ कैन से, तो यानी जब रिएक्शन होगा तो फिर ये सी और डी बनेंगे, तो फिर क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कम होगा फिर, और बैकवर्ड रिएक्शन फिर क्या होगा, वो बढ़ेगा, और अल्टीमेटली फिर एक स्टेज आएगा जिसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर होगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा। तो इस स्टेज में फिर हम क्या कहेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। इस स्टेज पे फिर हम क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस स्टेज पे हम रिएक्शन को क्या कहेंगे कि ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन, अब ये यानी कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है, ए बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी बना रहे हैं, तो रिएक्शन से पहले ये जो ना, तो उसके नतीजे में इनिशियल स्टेज में तो जब ये रिएक्शन नहीं होता तो फिर ए और बी की जो कंसंट्रेशन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी और ये इसकी कंसंट्रेशन सी और डी की ज़ीरो होगी। तो उसके बाद जब ए और बी आपस में रिएक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, इसके नतीजे में सी और डी प्रोडक्ट बनेंगे। तो उस सूरत में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो कंसंट्रेशन यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये बैकवर्ड रिएक्शन पर इंक्रीज होगा आहिस्ता आहिस्ता जब ये बनेंगे, फिर क्योंकि दोबारा डिसोसिएट होके ए और बी बनाएंगे, तो फिर यानी ये आगे जाएगा, ये रिएक्शंस आगे जाके ये जो आगे जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट फिर अगेन डिसोसिएट होकर रिएक्टेंट बना रहे हैं। तो दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, तो फिर एक स्टेज आता है जिसमें ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी ये वाला रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये जो रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि reversible reaction and equilibrium state. So this is the concentrations. If we're going to increase the concentration, so we can say this is the time, increase of time. So this is the, you can say, reactant A and B. So this is, we can say, if we are going to mix these two, so initial stage, we can say that initial state, the concentration of B and C is maximum at the top, while the concentration of C and D is zero. This is the zero, you can say zero. We can also write in this way that this is the concentration at zero.
this is zero stage, and this is the maximum. For example, you can say the 10 stage. So initially you can say that the concentration of the reactant A and B is equal to maximum at 10, while that of product C and D concentration is equal to 0. So this one you can say at here it's a zero stage. So is so by the reaction of A and B with the passage of time, as time increases, so A and B react with each other. So here the concentration of A and B is going to decrease, while that of concentration of C and D is going to increase. Now, the product is formed, and when the product is formed, the reversible reaction also started. So then a stage is reached where both the forward and the reverse reaction taking place. So we can say, and this stage is called state of equilibrium. So we can say here the concentration of A and B is going to decrease, while that of concentration of B and C is going to increase. So this is the stage at which both the concentration of A and B and concentration of A and B are the same, because this straight lines indicates that the concentration of B and C and A and B is the same. And when the concentration of A and B is the same, so this is the stage which is called equilibrium stage. Now at the equilibrium state, it seems that the reaction has stopped since no more product is formed. So at this stage you can say the reaction is stopped, where no reaction is going to, but no product is formed. So at equilibrium stage, you can say that actually the reaction continues and the amount of product formed is transformed back into reactant. यानी जो इक्विलिब्रियम स्टेज होता है उसमें रिएक्शंस हो रहा होता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो अगेन उसमें बैक रिएक्शन के जरिए से वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है. तो उस यानी वो जो इक्विलिब्रियम होता है ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, और फिर उस चीज को कहते हैं dynamic equilibrium. So we can say such an equilibrium in the reversible reaction is called the dynamic equilibrium. So we can say this line, this stage, we can say this is the dynamic equilibrium. Now this is some information given that nitrogen and oxygen are important components of atmosphere. They are used successfully in the industrial preparation of nitric acid, Berkeley process, which is very important chemical. In this process, air is passed through electric arc to obtain nitric oxide, N2 plus O2, that will give 2NO. The nitric oxide, which is this one, NO, is further oxidized to NO2 in the presence of oxygen. So this NO reacts with oxygen to form NO2. The NO2 gas is dissolved in water in the absorption tower and nitric acid is formed. So 3NO2 plus H2 is equal to 2HNO3, which is plus NO. So in this case the nitric acid is produced. So ये बता रहे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ये एटमॉस्फेयर के अहम कंपोनेंट्स हैं. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ये अहम कंपोनेंट्स है एटमॉस्फेयर में. तो फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये
जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है इसको इंडस्ट्री में जो ना इस्तेमाल करते हैं नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए। तो कैसे बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, ये रिएक्शन है। तो ये फिर बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, सो दिस वन। तो फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को अगेन ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, तो फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को फिर पानी के साथ मिला के नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। और ये नाइट्रिक एसिड एक अहम केमिकल है जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होता है। So you can say the next one is law of mass action. Law of mass action. So ये हम टेक्स्ट बुक के मुताबिक इसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे होते हैं। अगर मज़ीद तफसील इसकी मौजूद है, अगर इस हवाले से आप कोई पढ़ना चाहें तो फिर कमेंट्स में आप बता सकते हैं। So if you're going to get more information about this topic, so you can mention your views in comment section. So you can say that law of mass action, this law was suggested by two chemists, Goldberg and Vogt in 1864. It gives relations between the concentration of reactants and products. At equilibrium in a chemical reactions, this law states that the rate or speed of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substances. By the term active masses, we mean the molar concentration or number of moles per liter or cubic decimeter in a dilute solution. तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या चीज़ है? लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इस लॉ को टू केमिस्ट ने सजेस्ट किया था, गोल्डबर्ग एंड वाग इन 1864 में। ये हमें बताता है रिलेशंस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी अगर हमारे पास एक रिएक्शन है तो उसकी रिएक्शन है तो उसकी जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके दरमियान में जो रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम हालत में, यानी अभी हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इनके दरमियान में रिलेशंस होता है, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो वो रिलेशंस को हमें बताते हैं कि वो क्या होता है। तो इस लॉ के मुताबिक जो रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसका जो रेट या स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस, यानी जो रिएक्शन में रिएक्टेंट्स जो एक्टिव मासेस होते हैं, यानी rate of speed of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reactant substances. तो rate या speed of chemical reaction का ये proportion होता है directly या indirectly जो active masses होते हैं reacting substances होते हैं, यानी active masses के होते हैं उसके proportion होता है। So you can say यानी reactant में जो एक्टिव मासेस होते हैं उसका जो प्रोडक्ट होता है उसके प्रोपोर्शन होता है, स्पीड उस पर इंसार करता है। तो बाय दी टर्म एक्टिव मासेस का मतलब है, एक्टिव मासेस का मतलब ये है कि मोलर कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी जो एक्टिव मासेस होते हैं वो क्या होते हैं, मोलर कंसंट्रेशन होता है of the reactant substances. Now let's come towards its derivation. Derivation of the expression for equilibrium constant. Consider a general reaction in which two reactants A and B react to form a product C and D. So this is A and B react to form C and D. So according to the law of mass action, let the concentration of A be represented by A and that of B
by B bracket. According to the law of mass action, the rate of forward reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactants A and B. Applying the law, we get the rate of forward reaction is equal to, we can say, this is R1, is directly proportional to the product of the concentration of the reactants A and B. So ये बता रहे कि हम अगर एक मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक रिएक्शन है ए एंड बी जो मिल के सी एंड डी बना रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें जो मिसाल के तौर पर ये हम अगर कंसिडर करें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, अगर हम इसको करें कि ए स्क्वेयर और दैट ऑफ बी इज बी ब्रैकेट, you can say bracket, square bracket. So according to the law of mass action के मुताबिक फिर क्या है, जो rate of forward reaction है, यानी अगर हम ये कहें दिस rate of forward reaction, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो यू कैन से द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू R1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी product. Replacing the sign of proportionality by equality sign, we introduce a proportionality constant K1 and the above reaction becomes, so rate of forward reaction R1 is equal to K1 into A and B product. Here K is, you can say, the rate constant for the forward reactions. The reactions under study is a reversible reaction, as the product C and D are formed on when they back reacted on and are converted into reactant A and B for the reverse reactions. So you can say the rate of reverse reaction. Reverse reaction will be directly proportional to this product of C and D. So this is equal to K2 C and D. So you can say the first reaction is going to take place. The forward reaction is directly proportional to the concentration of A and B, while that for the reverse reaction is proportional to the concentration of C and D. So because we can say that this is the forward reactions in which A and B produce C and D, while that of this is the forward reaction, while this is the reverse reaction in which C and D dissociate to produce A and B. So we can say that Kc is the reactant of this is, so the rate constant for the reverse reaction is K2. Now let's come towards the next page. So at equilibrium, what will happen? So at equilibrium, the rate of forward reactions we have already discussed will be equal to the rate of reverse reaction. R1 is equal to R2. So we can say that K1 A and B is equal to K2 product of C and D. So this is you can say the K1 and K2 will come here. Now this will be equal to C and D. So C and D divided by A and B. So now therefore Kc will be equal to C and D divided by A and B, and Kc is equal to K1 divided by K2. Where Kc is called the equilibrium constant. The equilibrium constant Kc may be defined as the ratio of the product of the active masses of the product to the product of the active masses of the reactant. A large value of Kc shows that at equilibrium, the product concentrations are greater than those of the reactants and vice versa. The equilibrium constant for a reaction is independent
of pressure, temperature, and catalyst, and its value is constant for a particular reaction. तो यहाँ पर हमने ये जो रिएक्शन है ये हमने इसको हासिल कर लिया। तो इसमें जो केसी है इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये क्या चीज़ है, ये रेशो द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस, यानी ये क्या है, ये एक रेशो है जो एक्टिव मासेस का जो प्रोडक्ट है, यानी ये सी एंड डी और ए बी प्रोडक्ट का जो यानी प्रोडक्ट के जो एक्टिव मासेस है उनका जो प्रोडक्ट है, तो दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। यानी बेसिकली क्या चीज़ है, किसी जो है ये एक रेशो है जो एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट और एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट के दरमियान होता है। यानी अब ए एंड बी जो है ना, ये क्या है, ये एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट है, और सी एंड डी ये क्या है, एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट है। तो इनके दरमियान में जो रेशो है उसको हम क्या कहेंगे, के सी। इसको हम कहेंगे के सी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो लार्ज वैल्यू ऑफ के सी, अगर हम किसी की वैल्यू इक्विलिब्रियम स्टेज पे लार्ज होगी, ज़्यादा होगी, large value of Kc shows that at equilibrium the product concentrations are greater than those of the reactant and vice versa. अगर Kc वैल्यू जो है ना ज़्यादा है, Kc की जो वैल्यू है ये ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम स्टेज में, तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मुकाबले में, और अगर किसी की वैल्यू कम है तो उसका मतलब है जो प्रोडक्ट है वो उसकी कंसंट्रेशन कम है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के मुकाबले में। तो नाउ the product concentrations are greater than those of the reactant and vice versa. Now the equilibrium constant of reactions is independent of the pressure concentration exactly। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका रिएक्शन का जो होता है वो इंडिपेंडेंट, उसका इंहिसार नहीं होता प्रेशर कंसंट्रेशन या कैटलिस्ट के ऊपर, उसका इंहिसार नहीं होता, और इसकी वैल्यू पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान ये कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर ये बताया गया है कि वी हैव एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल वी हैव द वैल्यू ऑफ के सी एज कैन से 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 30, and 10 raised to the power minus 30, and 1. So which value of Kc for the following reaction predict that the reaction goes to completion in the forward direction? ये एग्जांपल हमें दिया गया है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट which is converted into calcium oxide plus CO2. This is a reversible reaction. So for this, we can say the Kc will be equal to the product of the concentration of the product divided by the concentration of the reactant. So since the reaction goes to completion in the forward direction, the concentration of the product is much more as compared to the reactant, and the value of Kc would be very large. Hence, the answer is 2, you can say 10 raised to the power 30. So we is given which value of Kc for the following reaction predicted the reactions goes to completion in the forward direction. So we can say that as this reaction is going to complete in the forward direction and again in the backward direction,
So when the reaction is complete, we can say that this is a minimum, this is a low value, this is the large value 10 raised to the power 30, and this is the low value, and this is also the small value. So when we can say that the reaction is going to complete, the reactions goes to completions, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मुकम्मल हो रहा है, तो फिर ये जो है कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इस मच मोर को प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन होगी ये फिर क्या होगी, ये ज़्यादा होगी इस कम्पेयर टू द रिएक्शंस, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस सूरत में जो केसी की वैल्यू होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो ज़्यादा होगी, वेरी लार्ज। तो फिर जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट का जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, क्योंकि केसी वैल्यू पर ज़्यादा होगी, और फिर केसी वैल्यू जब सबसे ज़्यादा होगी तो इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सी है, ये नंबर 2 10 raised to the power 13. So we can say this one value will be 10 raised to the power 13. So number 2 is correct. Next one is equilibrium constant and its units. Equilibrium constant is the ratio of the product of the concentration of the product to the product of the concentration of the reactant. So हमने पहले पढ़ा है कि जो equilibrium constant है वो क्या है, एक रेशो है जो कि यानी जो प्रोडक्ट का यानी प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसके और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसके दरमियान में एक रेशो होता है, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसके दरमियान में एक रेशो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशो होता है जो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान में होता है। Hence, the unit Kc depends on the equilibrium constant expression for a given reaction. For example, if a number of moles of the reactant and product are equal, the equilibrium constant has no unit, so as concentration unit cancel out on. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो बराबर है तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो कि फिर क्या होगा, यूनिट हो नो यूनिट, यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिट्स फिर उस सूरत में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल अकाउंट दिया गया है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ केसी द मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर of the following reaction. So NO produce N2 plus O2. We can say that write equilibrium constant expression, we get no units for Kc for the above reaction. So we are going to write the Kc. So Kc is equal to the product of the active masses of the product, which is this one, N2 and O2, divided by the concentration of the reactants, active masses of the reactant. So this is NO, it will be 2 moles, so it will be square in the form of square. So we can say that here it is given that if 1 mole, this is 1 mole of I can say 1 mole of each reactant and product. So both reactant and products are 1 mole. So this is the product N2 and O2, and we are given that 1 mole of each reactant and product. So 1 mole per cubic decimeter, and we can say 1 mole per liter, because decimeter, cubic decimeter is also equal to liter. So in this case, the concentration of N2 is 1 mole per liter or cubic decimeter, while the concentration of oxygen is also
1 mole per cubic decimeter, while that of NO is also 1 mole per cubic decimeter raised to the power 2. So in this case, the units cancel each other. We can say that mole is cancelled with this mole. So here is square. So it means that there are 2 moles. So we can say, we can write this, that this is this is the 2 into, you can say 1 mole, per, so per cubic decimeter. So this mole will also cancel with this one, and this, all that cancel with each other. So we have got a unit number of 1. So we have got no unit. So because there is an equilibrium in the reaction between the reactant and product. The value of equilibrium constant calculations. The value of equilibrium constant can be calculated if we know the concentration of the reactant and product in the equilibrium mixture. यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो एग्जाम्पल है, in the equilibrium mixture the concentration of hydrogen and iodines is 0.04 mole per cubic decimeter each, while that of hydrogen iodide is 0.08 mole per cubic decimeter. Find Kc for the following reaction. So hydrogen and iodine react to form hydrogen iodide. So if we are going to write the equilibrium constant, which is Kc, so this is the product of it's a product. So Hi, 2 moles. So this is 2 moles. So we will write this is square. So this is 1 mole. This is also 1 mole. So we can just multiply the, or we can say multiply the reactant species, which is H2 and I2. So in this case, Kc will be equal to S, the concentration of hydrogen and iodine is this is 0.04 mole per liter each. So you can say so this concentration is 0.04. This is also 0.04, and this is 0.08. So you can put the value, say 0.08 square divided by 0.04 into 0.04. So we will get the value of 4. So in this way we can calculate the equilibrium constant. Now, important application of equilibrium constant. The value of equilibrium constant is specific and remain constant at a particular temperature. The value of constant helps us to predict. We know that Kc is equal to the product divided by reactant for any reaction. So the direction of chemical reactions at any particular time can be predicted by means of product divided by reactant ratio. The value of product and reactant ratio leads to one of the following 3 possibilities. We can say that first one is the ratio is less than Kc. This implies that more of the product is required to attain the equilibrium. Therefore, the reaction will proceed in the forward direction. ये बता रहे कि अगर Kc की जो वैल्यू है ये कम है, तो इसका मतलब है रिएक्शन मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए
तो इस सूरत में फिर क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा टू प्रोड्यूस फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ताकि मजीद प्रोडक्ट बन जाए। तो अगर अगर रेशो यानी जो केसी है, रेशो केसी से ज़्यादा है केसी वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि रिवर्स रिएक्शन हो रहा होगा इक्विलिब्रियम को हासिल करने के लिए। और अगर ये रेशो केसी के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। नो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, if the equilibrium constant is very large, this indicates that the reaction is almost complete. अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो फिर ये ज़ाहिर करते हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल, अगर किसी की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर किसी वैल्यू कम है तो फिर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में अप्रिशिएबल तरीके से ये नहीं प्रोसीड होगा। और अगर if the value of Kc is moderate, this shows a very little forward reaction. अगर किसी की वैल्यू दरम्यान में तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन लिटल क्वांटिटी में होगा। और नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ external conditions on the position of equilibrium. When a system reaches equilibrium, it will remain in same state indefinitely. If the conditions don't change, however, the equilibrium state of a system is disturbed. If the external conditions are changed or change of pressure, temperature, and concentration of the reactant product alter the position of the equilibrium. Whenever the equilibrium is distributed by change in the external condition, the system always tends to restore equilibrium. So we can say in case of changing the external, अगर हम external जो pressure है चीज़ें जो चेंज करेंगे तो यानी कि जैसे चेंज ऑफ प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट के ऊपर, तो ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन फिर भी नहीं जो सिस्टम जो ना इक्विलिब्रियम की तरफ हो जाएगा ताकि वो इक्विलिब्रियम को रिस्टोर कर सके। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नाउ कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, the following are the conditions of chemical reactions. Number first one, when the chemical equilibrium is established in a closed vessel at constant temperature, concentration of various species in the reaction become constant. The concentrations are called equilibrium concentration. बता रहे कि अगर हम chemical equilibrium अगर हम वो हमारे पास हो क्लोज कंटेनर या वेसल के अंदर और उसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो फिर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगी ना जो वेरियस स्पीशीज की रिएक्शन में वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जो कंसंट्रेशंस होंगे ना उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। So when chemical equilibrium is established in a closed vessel at a constant temperature, concentration of various species in the reactions become constant. The concentrations are called equilibrium concentration. The equilibrium cannot be attained in open vessels. Open यानी equilibrium को हम एक closed container में तो इसको बना सकते हैं, लेकिन open container में या vessel में हम इसको नहीं बना सकते। बिकॉज ओपन वेसल में जो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं एटमॉस्फेयर की तरफ, और तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं, लिविंग बिहाइंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ अटेनिंग इक्विलिब्रियम। तो यानी ओपन वेसल में हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि गैसेस जो प्रोडक्ट है रिएक्टेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। The third one is a catalyst cannot change the equilibrium point. It only speed up the rate of both the forward and reverse reaction. तो catalyst का जो इफेक्ट होता है किसी रिएक्शन के ऊपर, इक्विलिब्रियम को वो क्या करता है, वो चेंज नहीं करता, बल्कि ये कैटलिस्ट होता है ये जस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करता है। यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रिवर्स है उसको स्पीड अप करता है।
अगर हम कैटलिस्ट डालेंगे तो रिएक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पीड अप होगा या रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड अप होगा। तो कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को पॉइंट को चेंज नहीं करता, सिर्फ वो रिएक्शन को स्पीड अप करता है। The experimental method used for the determination of equilibrium constant depends on the nature of the reactant and temperature. Two types of procedures have been used. In the first of this, the reactant substances are sealed into glass tubes and allowed to attain equilibrium and contents are analyzed. The second procedure is the flow method, in which the gases are passed through a tube and equilibrium mixture is analyzed. When the concentration of the equilibrium mixture become constant, the equilibrium is established. This is the principal criteria of a chemical equilibrium. तो ये बता रहे कि तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मालूम करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज होते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल मेथड हो जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड टेम्परेचर के ऊपर। सो टू प्रोसीजर्स वो यूज़ किया जाता है। फर्स्ट में ये होता है कि जो रिएक्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनको एक सील्ड ग्लास ट्यूब में रखा जाता है ताकि वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर सके, और उसके बाद फिर उसके जो कंटेंट्स होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। तो सेकंड प्रोसीजर में क्या होता है, सेकंड जैसे फ्लो मेथड में क्या होता है, जिसमें जो गैसेस होती है वो एक ट्यूब में से पास की जाती है, तो उसके बाद फिर जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है उसको एनालाइज किया जाता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है ना ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो ये क्या है, प्रिंसिपल क्राइटेरिया ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है। So these are the key points. We'll discuss it later. Next lecture.